Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Okay, so beta, last session we had done assignment number 4. We had done the topic of raising a lighthouse or having a lighthouse right ahead at a given distance when current is there. And the second topic which we did was blind navigation or using a single PL to steer safe courses. So these were the last two topics which we did. Anybody having any doubts in assignment 4? Everybody completed better? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Last of assignment 4. Say again, beta. Sir, last question of assignment 4. Okay, let me open up. What is the doubt, beta, in last question? Sir, in that, sir, course is not given. We have the speed, engine speed. We have the current, but the course is not given. So how we will go for that? Okay, just give me a minute. सर एक चीज और पूछनी थी जब इंजन स्पीड हेलो Just a minute, beta. Let me answer him for number 3, then last question. Then I'll come to you. ओके Okay, so here we have this question, beta. Last question, the number 3 question. A vessel in DR so-and-so at 0900 obtains an intercept 4 miles towards azimuth is 110 by sun's observation. Visibility becomes near zero. Electronic navigates non-operational. Find the safe courses to steer to reach the pilot station. Now they are saying that vessel is moving at a speed of 8 knots and the current is 150 at 3 knots. So your doubt is that the course is not given. So how do we plot the safe courses, right, beta? Yes, sir. Okay. सी बेटा सबसे पहले तो आप ये PL को प्लॉट कर लोगे बाय द इंटरसेप्ट मेथड. दैट्स ओके. Yes. Okay. अब बेटा if you remember when we did the presentation on safe courses, I told you that the first course made good should be perpendicular to the direction of the PL. Do you remember beta? Yes, sir. So जो भी आपकी PL की डायरेक्शन आई है, you have the azimuth 110, so you know what is the direction of your initial PL. Perpendicular to that, at right angles to that, you will take your CMG. So you see, perpendicular to the initial PL is our course made good. So I told you in some questions the course steered or course made good may be given to you. So in that case you pick up that particular course. But if it is not provided in the question, then the first course made good is taken as perpendicular to the initial PL. Okay, sir. Okay. अब तो हो जाएगा बेटा क्वेश्चन. हाँ जी सर, हाँ जी अब हो जाएगा. Okay. Now you had other doubt beta, somebody else? सर गुड मॉर्निंग शिवांग
गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। सर जब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें इंजन स्पीड और दूसरा अपने को डिस्टेंस दोनों दे रखा था, लाइक 45 मिनट्स का तो ये दे रखा था फर्स्ट। हाँ ठीक है बेटा। मैंने क्वेश्चन पहले 1 घंटे के ट्रायंगल से किया था, नॉट विद 12 माइल्स। तो इसमें जो ट्रायंगल है वो मतलब जैसे ये 12 माइल्स का तो जैसे ए पॉइंट पे काट रहा है डायरेक्टली, पर जैसे Right. एक घंटे का अगर ट्रायंगल लेंगे जैसे 4 नॉट्स और ये, तो उससे ना तो मतलब कॉन्सेप्ट इज दिस कि एक अगर स्पीड दी हुई और डिस्टेंस दिया हुआ है तो डिस्टेंस कंसीडर करना है, पर करना है ये तो समझ गया, पर क्यों करना है वो समझ नहीं आया। अगर अपन 1 घंटे का ट्रायंगल लेके टाइम निकालना चाहते तो बात बराबर होती ना, 1 घंटे का ट्रायंगल क्यों नहीं ले सकते इसमें? नहीं बेटा, 1 घंटे का ट्रायंगल यहाँ नहीं ले सकते हैं। आई टेल यू वाई। हाँ सर। तो नीचे दिया हुआ 16 नॉट। राइट, ओके। अब देखो बेटा, अगर आप यहाँ पे 1 घंटे का ट्रायंगल बनाते हो, हाँ जी सर। राइट, 1 घंटे का ट्रायंगल अगर आप यहाँ बनाते हो, सी ये जो करंट हम लगा रहे हैं, हाँ दिस इज फॉर द टाइम पीरियड व्हेन यू आर एबल टू कवर द डिस्टेंस ऑफ, जैसे डिस्टेंस ऑफ यहाँ पे 12 माइल्स उन्होंने हमें दिया है, so we calculated with a speed of 16 knots we will be covering it in 45 minutes। तो ये जो करंट है इसे हम उतने ही टाइम के लिए लगाते हैं। अब लेट अस से, जैसा आप बोल रहे हो, अगर हम 1 घंटे का ट्रायंगल बनाएं तो क्या होगा, लेट्स सी। मैं अगर 1 घंटे का ट्रायंगल बनाता हूं तो सबसे पहले तो मैं करंट वेक्टर लगाऊंगा विच विल बी स्लाइटली लेंदी, समथिंग लाइक दिस। 4 नॉट्स। हाँ सर। करेक्ट, लेट मी पुट इट 3 एरोज। अब जो मेरी इनिशियल पोजीशन है मुझे उससे इस पॉइंट को अटैच करना है, हाँ दैट्स करेक्ट। राइट। एंड अब मुझे क्या करना है, अब अगर मैं 1 घंटे के लिए लेट अस से मेरा डिस्टेंस अब 16 हो जाएगा, सो यहाँ से मैं 16 माइल्स का जो है वो आर्क ड्रॉ करता हूँ। लेट अस से दैट आर्क कम्स समवेयर हियर, यस सर। राइट बेटा। so let me join this also, so this becomes my CMG and this becomes my CTS, correct? यस सर। अब बेटा जब शिप यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे, let's call that as X, you see ship will be heading like this, that means the lighthouse will be right ahead and it will be moving on the CMG line, correct? यस सर। so अब ये जो lighthouse right ahead आया है बेटा, ये कितने डिस्टेंस पे आ गया है 16 माइल पे। और हमें ये कितने डिस्टेंस पे चाहिए, 12। ये गड़बड़ हो जाएगी बेटा। तो बस इसमें ये है कि जब डिस्टेंस नहीं दिया हुआ तब ट्रायंगल वी विल मेक बाय द स्पीड, बाकी तो अगर डिस्टेंस दिया हुआ है तो वी आर डायरेक्टली वो करना है। हाँ बेटा, जो भी डिस्टेंस ऑफ हमें दिया है हमें CTS वेक्टर को उतना ही लंबा रखना है, और अगर CTS वेक्टर उतना है तो फिर ऑब्वियसली करंट वेक्टर भी उतने ही ड्यूरेशन का होगा एंड ऑब्वियसली CMG भी उतनी ही ड्यूरेशन का होगा, तभी सर हम। फिर जैसे इस क्वेश्चन में कोर्स पूछा था तो कोर्स में तो मेरे डिफरेंस आया नहीं, कोर्स वाज 300 एंड दिस आंसर वाज 302 आई थिंक। तो कोर्स में मेरे डिफरेंस आया नहीं, बाकी मेरे जैसे डिस्टेंस जो टाइम पूछा था उसमें मेरे लाइक 12 मिनट का डिफरेंस आ रहा था, तो दैट वाज अ डिफरेंस बेसिकली। मैंने दोनों तरीके से करके देखा था इसको, तो उसमें ये प्रॉब्लम थी। बेटा चाहे डिफरेंस 0 भी आए, जो हाँ। फंडामेंटल है वो तो यही रहेगा, और अच्छा। एग्जामिनर जब इसे चेक करेगा तो हाँ वो सर। ये चीज़ देखेगा पहले कि आपने ट्रायंगल कितने ड्यूरेशन के लिए बनाई है। आंसर ओके। मैचिंग और नॉट मैचिंग विल कम एट ए लेटर स्टेज। नहीं सर वो ठीक है सर, मैं तो मतलब बता रहा था मेरे को जो डाउट था। Right. It is possible that the answer may not differ much. Okay, that could be how the triangle is being formed. It is possible कि difference बहुत कम आए, but Yes. still we have to be fundamentally correct.
ओके सर, थैंक यू सर, यही पूछना था। ओके बेटा। One more doubt with question number 1, sir. नंबर 1 सर बोलो ये बेटा। जो ये सेकंड पार्ट है सर, जो एस्टिमेट द टाइम टू हैव माइन हेड लाइट टू ईयर नॉर्थ वेस्ट, लाइक उसने चार्ली पॉइंट पे काटा हुआ है सॉल्यूशन पे, जो नॉर्थ वेस्ट के लिए पॉइंट है सर। तो राइट बट इफ आई कीप माय वेसल एट पॉइंट चार्ली विद हेडिंग ऑफ 301, तो ये अपने स्टारबोर्ड में आ रहा है सर, लाइक नॉर्थ वेस्ट, इट मींस कि लाइक वो अपने पोर्ट बाव पे होना चाहिए वेसल, ओके बट इसने डायरेक्टली 315 बियरिंग लेके लाइट हाउस से ड्रॉ करके जो कैलकुलेशंस किया हुआ है सर, वो समझ नहीं आया कैसा है। ओके बेटा, अभी समझते हैं इसको। What they want from us is mine head light to your northwest. Correct बेटा? That's right. यस सर। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है ये क्या डायरेक्शन है? 315 सर। ये रही नॉर्थ वेस्ट एंड दिस डायरेक्शन इज 315। करेक्ट, ये तो फिक्स्ड है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यस सर। राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ बेटा, अब मैं सबसे पहले चार्ट पे, shall we go on to the chart? Okay, no problem. Just concentrate here बेटा। ये माइन हेड लाइट हाउस है हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, देयर इज नथिंग एल्स। अब माइन हेड लाइट पे मैंने अपनी अटेंशन जो है वो कंसंट्रेट की एंड मुझे माइन हेड लाइट 315 की बियरिंग पे चाहिए। सो मैंने अपने पैरेलल रूलर को 315 के साथ अलाइन किया और उसे यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। जब मैंने ट्रांसफ़र किया तो मेरे पास ये एक लाइन आ जाएगी। ओके, दिस लाइन बेसिकली रिप्रेजेंट्स द 315 डायरेक्शन। हमारा शिप कोई भी हेडिंग पे हो, नॉर्थ हेड कर रहा हो, ईस्ट कर रहा हो, साउथ या वेस्ट हेड कर रहा हो, माइन हेड लाइट भी यहीं रहने वाला है, 315 की बियरिंग लाइन भी यहीं रहने वाली है। करेक्ट बेटा? यस सर। राइट। अब अगर ये लाइट हाउस को मुझे अपने नॉर्थ वेस्ट में लेके आना है, आई हैव टू बी समवेयर ऑन दिस लाइन, मुझे इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होना पड़ेगा, तभी ये लाइट हाउस मेरे नॉर्थ वेस्ट पे आएगा। करेक्ट? ठीक है सर। ओके। यस सर। Right. Whether the vessel is steering a northeasterly course or the vessel is steering a southwesterly course, that does not matter at all. This lighthouse will be northwest of me or on the bearing of 315 when I am on this line. That is why इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ ये लाइन ड्रॉ कर दी है and wherever that line cuts our CMG, which is the point Charlie, that has been picked up. ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके ओके, और बताओ बेटा, और कोई डाउट? Okay, very good. So looks like the doubts are sorted out. So in that case बेटा हम अपने नए टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। अब जो आगे टॉपिक आने वाले हैं, there are 3 topics which are there in front of us. First one is fish triangle. Second one is rendezvous, rendezvous, it can be called by any name. And the third one is known as missing leg or missing course. ये तीनों टॉपिक जो हैं ये टिपिकल टॉपिक है। टिपिकल मीन्स थोड़े अलग तरह के दिखाई देंगे आपको। Why? Number one, they were not there in second mates. They are only in phase 1. Second mates में ये topics cover नहीं किए जाते। So the topics will be slightly new for you. You will be grasping it for the first time. जो चीज़ अनफेमिलियर हो उसे पहली बार ग्रास्प करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो एक तो ये चीज़ है बेटा कि तीनों टॉपिक को जो है हमें थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि ये हमारे लिए नए हैं। दूसरी चीज़ जो अभी नया टॉपिक आने वाला है फॉर टुडे,
that is the topic of fish triangle. ये जो टॉपिक है फिश ट्रायंगल का, नंबर 1, इट इज़ नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। मतलब ये शिप पे आप कभी भी प्रैक्टिकली ना आपने यूज़ किया होगा। आई कैन गिव यू ए गारंटी, जब ये टॉपिक हम करेंगे ना किसी ने ये आज तक शिप पे यूज़ किया होगा। एंड बेटा मैंने अपने कैरियर में कभी इसको यूज़ नहीं किया है, और आई एंटिसिपेट कि आप भी अपने पूरे कैरियर में इसे कभी यूज़ नहीं करने वाले हो। सो इट इज़ ए टोटली इम्प्रैक्टिकल टॉपिक। ओके, टोटली इम्प्रैक्टिकल है ये, प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होगा। ऐसा सिनेरियो नहीं हो सकता जिसमें ये टॉपिक आप यूज़ करो। अब ये डाउट आता है माइंड में कि फिर हम इसे कर क्यों रहे हैं। करने का सोल पर्पस है कि ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आता है। ये पास्ट पेपर्स में बहुत बार आ चुका है और आगे भी इसके आने के चांसेस हैं। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा प्राइमरी गोल पेपर को पास करना है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड cover this topic so that we can solve the questions coming in the paper. So दो चीज़ें हो गई, एक तो ये नया टॉपिक है, दूसरा नॉट प्रैक्टिकल, इसे हम प्रैक्टिकली कभी यूज़ नहीं करने वाले हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। कभी कभी आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट्स जब ओपन करते हो तो वहाँ पे लिखा होता है ना, वार्निंग लॉन्ग पोस्ट अहेड, राइट बेटा। सो ये जो टॉपिक है ये कुछ ऐसा ही है। सो मैं पहले ही आपको वार्निंग दे रहा हूँ, वार्निंग लॉन्ग टॉपिक अहेड। ये थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी होने का मतलब है कि इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इट इज़ नॉट दैट कि आपने VSA का फॉर्मूला लगाया, वर्टिकल सेक्सटेंट एंगल का, और पोजीशन सर्कल बना दिया, या आपको एक बियरिंग लाइन मिली, आपने उसे ड्रॉ कर दिया, रेसिप्रोकल बियरिंग थी या ट्रांजिट बियरिंग थी, आपने उसे ड्रॉ कर दिया और आपके पास PL आ गई। नॉट लाइक दैट। इनमें तो एक एक ही स्टेप था। ये जो टॉपिक है इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में ये करना है, स्टेप 2 में ये करना है, स्टेप 3 में ये, स्टेप 4 में ये, स्टेप 5 में ये, बहुत सारे स्टेप्स आएंगे। सो वार्निंग है आपके लिए लॉन्ग पोस्ट अहेड। हम इसे धीरे धीरे कवर करेंगे ताकि आप इन स्टेप्स को कैच कर पाओ। इफ़ रिक्वायर्ड आप अगर मुझे बोलोगे तो मैं इसे दोबारा से रिपीट भी कर दूंगा। ओके, सो ये तीसरी चीज़ हो गई कि इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और हमें इन स्टेप्स को आराम से धीरे धीरे समझना है। अब आती है चौथी और लास्ट बात कि ये जो स्टेप्स हैं इन्हें हमें मेमोराइज करना पड़ेगा बेटा। मेमोराइज, जैसे आप जब मैथ्स करते हो या साइंस पढ़ते हो तो मेमोराइज ज़्यादा नहीं करना पड़ता। यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन राइट योर आंसर्स इन द एग्जाम। लेकिन जब आप सोशल स्टडी पढ़ते हो तो आपको मेमोराइज करना पड़ता है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या चीज़ लिखनी है पहले से। मैथ्स का एक क्वेश्चन आता है, यू नीड टू नो द फॉर्मूला एंड यू कैन सॉल्व इट, यू डोंट नीड टू मेमोराइज। ओके, सो इस क्वेश्चन में डिफरेंट चीज़ ये है कि जो ये स्टेप्स आएंगे इन स्टेप्स को हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, तभी हम इनको एग्ज़ाम में या क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि हमने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप ये सोचो कि मैंने क्वेश्चन को रीड कर लिया है और मैं रीड करके इसमें अपना दिमाग अप्लाई करूँगा, मैं प्लॉट करना शुरू कर दूँगा चार्ट पे और मुझे आंसर मिल जाएगा, तो इस टॉपिक में ऐसा नहीं होगा। ओके, सो आई होप यू हैव गॉट ऑल माय पॉइंट्स। नाउ लास्ट चीज़ बिफोर आई प्रोसीड ऑन टू दिस टॉपिक, इसका नाम कहाँ से आया, फिश ट्रायंगल। इसका बेटा कोई भी ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं है। बुक्स में भी आपको शायद ये फिश ट्रायंगल का नाम ना मिले, ये नाम बनाया हुआ है। ओके, क्यों बनाया हुआ है? वो जब हम छोटे थे तो ड्राइंग में ना ऐसे फिश बनाया करते थे, इसका जो प्लॉट है कुछ वैसा ही बनता है। सो इसलिए इसका नाम दिया गया है फिश ट्रायंगल। सो इट इज़ नॉट इन्वॉल्व विद फिशेस इन एनी वे। ये हम प्लॉट करेंगे तो कोई फिशेस शिप के पास नहीं आ जाएंगी। इट इज़ जस्ट ए स्लैंग नेम विच इज़ गिवन टू दिस मेथड। ओके, सो जब ये प्लॉट हो जाएगा देन आई विल टेल यू कि ये फिश
कैसे बनती है। सो सिर्फ एक स्लैंग नेम है जो इसे दिया गया है टू आइडेंटिफाई द मेथड। आपस में जब कैंडिडेट्स बात करते हैं जैसे और ये फिश ट्रायंगल का क्वेश्चन आया था इस बार पेपर में, सो दैट इज़ द होल पर्पस ऑफ नेमिंग इट एज ए फिश ट्रायंगल। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जिसने भी बनाया है उसने ज्योमेट्री को यूज़ किया है, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज़ किया गया है इस क्वेश्चन को बनाने में और सॉल्व करने में। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल बी यूजिंग द ज्योमेट्री प्रिंसिपल्स ओनली। हम ऐसे प्लॉट बनाएंगे कि एज पर ज्योमेट्री हमें हमारा आंसर मिल जाए। So have you understood these points? Any doubt in any of the points you can ask me? No, sir. Okay. So आगे चलें बेटा? Shall we start off with this fish triangle question now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let me set up the presentation. So let's see the fish triangle question now. This question basically involves three bearings of different objects with the direction of the current given to us, but no rate. Let's first of all see what is the data provided in these type of questions. Now, when you read the question, you should be able to identify that this is a fish triangle question. Then only you will be able to solve it. So the first thing which should be clear in our mind is what all data is provided. So the data which is given in these questions is, they will give us three true bearings of either two or three different objects. They will also tell us what is the time interval between the three bearings. They will give us the compass course steered by the vessel. They will give us the engine speed. They will give us the direction of the current or set of the current, and if any wind or leeway is there, they will give us the direction of the wind and also the leeway angle. What we are required to find out is the position of the vessel at the time of the three bearings. So we need the position at all the three times. We need to find out what is the course made good and what is the speed made good. And we also need to find out what is the rate of the current. Now beta, one difficulty which you are going to face in these type of questions is that this question is very similar to another question which is called as 3-point bearing. So how to identify whether it is a fish triangle question or it is a 3-point bearing question? सर आवाज बहुत कम आ रही है आवाज. For this, okay Yes. beta. Now is okay. Yeah.
Actually, there is an issue with the speaker. So you have headphones, beta? Yes, sir. Okay, I will. Just headphones, I will- put on the headphones. Yes, sir. There Okay. are two important differences between these two questions. The first one is that in a fish triangle question, you will have the three bearings from different objects. There will be either two objects or three different objects from where the bearings are provided. In case of a 3-point bearing question, all the three bearings are provided from a single object or from a single lighthouse. So that is the important differentiating point with which you can easily identify whether it is a 3-point bearing question or a fish triangle question. सर बोलो बेटा। सर ये वाला पॉइंट जरूरी थोड़ी ना है सर, क्योंकि 3-पॉइंट बेरिंग में भी तो होता है, कभी कभी 3 लाइट हाउस से बेरिंग दी रहती है, वो तीनों एक जगह पे कटती हैं, तो उस पॉइंट से हम फिर वो स्टार्ट करते होते हैं। Are you talking of the virtual lighthouse, बेटा? हाँ जी सर, जैसे Yeah. वो तीन लाइट हाउस से बेरिंग दी होती है, वो तीनों कटते हैं, तो हम उसको एक वर्चुअल लाइट हाउस काउंट करके फिर स्टार्ट करते हैं, वो भी तो 3 पॉइंट में ही आता है सर। राइट बेटा, आई एग्री कि वो 2 लाइट हाउसेस से या 3 से भी हो सकती हैं, बट हाँ जी। अल्टीमेटली हमें उनको एक जगह पे इंटरसेक्ट करना पड़ेगा ना। हाँ अगर जी, हाँ वो जी। एक नहीं, पॉइंट पे जैसे अभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो फिर 3-पॉइंट बियरिंग का मेथड यूज नहीं होगा। हाँ जी, अच्छा इसमें नहीं करती? ओके, यस, इसमें ओके, बेटा ठीक। वो एक सिंगल पॉइंट पे कट नहीं करेंगी। ओके, ओके सर, ठीक है, फिर ठीक है। ओके। ओके, सर बोलो बेटा। सर इसमें जो पहले वाली फ्लाइट थी उसमें दिया था 3 ट्रू बेयरिंग और 2 और फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट्स। तो सर ये श्योर है इसमें सिर्फ 2 बेयरिंग ही मिलेगी, इसमें कोई जैसे कंपास जायरो ये कोई नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही बेयरिंग है? नहीं बेटा, कंपास बियरिंग भी मिल सकती हैं। द ओनली थिंग इज वील हैव टू अप्लाई द कंपास एरर एंड दैट्स ओनली आई एम आस्किंग, मतलब क्वेश्चन में तो कोई भी आ सकती है ना। राइट बेटा, राइट, कोई भी आ सकती ओके है। ओके। राइट। Now the second important difference is that in these questions the rate of the current is not given. In fact, this is one of the things which we are required to find out. Whereas in 3-point bearing questions, generally in most of the questions you will see the rate of the current is provided in the question itself. So these are the two important differentiating points which will help you to find out that this is a fish triangle question. Now, one more thing I would like to discuss here, that this terminology, the fish triangle, is not a standard name. It is just a slang name which is given to this particular method. Also, this method is based on geometry. It is based on calculation of the plot or the positions using geometric properties. Practically, as far as practical chart work is concerned, I doubt very much that you will be using it anytime navigating on board a ship. I have never used it, so practically I don't anticipate that this method will be used anytime. However, questions based on this, they keep on coming in the question paper. So it is important that we understand and know how to solve these questions. Okay. Now, another important thing is that in this question, there is a particular stepwise process which we follow. So I will explain to you it step by step, but basically you need to memorize all the steps. And go ahead, beta. सर ये बैक स्लाइड थी ना, वो दिखा देना एक बार प्लीज। Okay. And you should know
ये लो बेटा. थैंक यू सर. Okay. Now another important thing is that in this question there is a particular stepwise process which we follow. So I will explain to you it step by step, but basically you need to memorize all the steps and you should know what step is to be taken in the beginning, after that, and in the end. Once you know the steps, it will be very easy to solve the questions. If you try to think it out, let's say you don't memorize the steps, you have this question in the paper, and you try to think which step should I be following in the beginning and which step after that, it will not be possible for you to think out this question. So the steps should be memorized. So let's go into the steps one by one. First of all, let's have the chart in front of us. Now, the first thing which we have to do, the first step which we have to follow is identify the objects or lighthouses from where the bearings are given. Now in our plot, you can see two lighthouses here. This is the first one and this is the second one. So we are given bearings from these particular lighthouses. Let's name these lighthouses as O. O is commonly used for any object. Let's assume that the first bearing which is given to us from this particular lighthouse is this one. Let's name this bearing as OX, and this bearing was taken at 1000 hours. Let's plot the second bearing now. You can see the second bearing line on the plot. This bearing was taken at 1024 and let's name this as OY. Let's plot the third bearing line now. This is the third bearing line which is given to us and this was taken at 1100 hours. Let's name this as OZ. So you have all the three bearing lines on the chart, OX, OY, OZ, along with their times. Now we have to plot our course steered on the chart. If you are given compass course, you have to apply the deviation and the variation to the compass course, which will give you the true course steered. If there is any wind or leeway given to you in the question, we have to apply the leeway angle and we have to find out what is the leeway track. In case of wind, leeway track is what we plot on the chart. So up to here, okay beta, we have just plotted the three bearing lines. Yes sir, Hanji. Okay. Now we may stretch a little bit into the break also, but we will finish this topic and then we will have a break. Okay sir. Okay. Now once you have the true course steered with you, or if there is leeway, the leeway track known to you, you have to pick up any point of your choice on the first bearing line, that is OX. So let's pick up a point here and let's name that point as A. So we have just picked up one point here, point A. Now from this point A, we have to draw the course steered or leeway track, whatever is given to us in the question. So from this point, let's draw the course steered or leeway track. It is marked with a single arrow, so let's mark it with a single arrow.
Now wherever this course goes and meets the third bearing line, that is OZ, let's name that point as B point. So A is any hypothetical point on the first PL, and we have just drawn the course which we are steering. So course steered is marked on the chart. So up to here clear beta? Any doubts? Okay, let's move on to the next step. Now, as per our engine speed, we have to calculate the distance run by the vessel between the first bearing OX and the second bearing OY. So basically in this case, the distance run by the ship between 1000 hours and 1024 hours. So we have to find out this engine distance, and from A we have to measure this distance along the course steered. And once you measure this, whichever point you reach up to, name that point as point C. So we have point C here. Now, सर इंजन स्पीड को मतलब 24 मिनट के लिए कैलकुलेट करना है, राइट सर? That's right, beta. Okay. Distance run between the second bearing line, that is OY at 1024, and the third bearing line, that is OZ at 1100 hours. And once we have this engine distance, we have to measure it along the course steered from point B in the reverse direction. So this distance is to be measured from point B in the reverse direction, and wherever you reach, name that point as point D. So let us say we measured this distance up to here, and we have obtained this point D. So this is also clear, beta? सर लास्ट पॉइंट क्लियर नहीं हुआ. लास्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि नीचे की डिस्टेंस मेजर कैसे? ओके बेटा, हमारी जो सेकंड पीएल है वो 1024 पे थी. हाँ सर. थर्ड पीएल जो है वो 1100 पे थी. So what we are doing now is we are calculating how much distance we will cover in this 36 minutes using our engine speed. Right? Okay. And from point B, I have marked this distance in the reverse direction and obtained the delta point. Okay sir. Okay बेटा, चार्ली डेल्टा दोनों पॉइंट समझ में आ गए? सर चार्ली कैसे मिला इसमें तो डिस्टेंस काट दिया जैसे 36 मिनट का बी पॉइंट पे रख के. चार्ली का आगे से मतलब डिस्टेंस. ओके, यू वांट टू अंडरस्टैंड कि हमें चार्ली पॉइंट कैसे मिला है? हाँ. ओके बेटा, पहली बियरिंग लाइन जो है वो किस टाइम के लिए है? 1000 आवर्स, राइट? ठीक है. सेकेंड बियरिंग लाइन इज 1024. ओके, तो 24 मिनट का डिस्टेंस काट दिया इंजन स्पीड से. You're right, from the starting point A. That's how we got Charlie. ठीक है सर, समझ गया. Okay. Just a minute. Now, in the next step, what we have to do is we have to transfer our first bearing line, that is OX, to pass from point C. So
You have to pick up your parallel ruler or set square or sliding ruler, align it with OX, move it up to point C and draw a parallel line. Let's draw it on the chart. So you have this parallel line drawn on the chart. So basically we have transferred the initial position line. Let's name this as TPL1, that is transferred position line 1. Similarly, we have to transfer the third position line, that is OZ, which was taken at 1100 hours. We have to transfer it backwards so that it passes from point D. So we pick up our parallel ruler, set square or sliding ruler, align it with OZ, transfer it backwards so that it passes from point D. So you can see we have transferred the third PL backwards. Let's name this as TPL3 or transferred PL3. Now you can see सर इसमें डबल एरो नहीं लगाएंगे? नहीं बेटा, ये डबल एरो अभी नहीं लगेगा, क्योंकि आप ये देखो ट्रांसफ़र जो एक्चुअली करते हैं वो CMG पे करते हैं, पर हमने यहाँ पे सिर्फ CTS पे इसको ट्रांसफ़र किया है. So they are not actually transferred PL. They are some lines which we require to complete our plot. Got it, beta? Understood? अंडरस्टूड सर. सर ये OY को ट्रांसफर क्यों नहीं किया था? बेटा क्योंकि मेथड में नहीं है. ओके, क्योंकि हमने सर जो टाइम जो डिस्टेंस लिया था वो AC से वो है, तो हमारा OY है ना, सेकंड जो लाइन है सर. राइट. हमने बेटा हाँ तो सर पहला डिस्टेंस 24 लिया था, 24 मिनट्स, 1000 to 1024, यस और सर. हमने फर्स्ट PL को 24 मिनट्स आगे ट्रांसफ़र कर दिया. ओके सर, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस लिया था वो उससे मेजर कर रहे थे ना सर, OY के थ्रू. ये OY को C पॉइंट पे होना चाहिए था. बेटा OY तो जहाँ है वहीं रहेगी और C पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, बिकॉज A इज़ ए हाइपोथेटिकल पॉइंट. ओके सर. ओके राइट. थैंक यू. OY तो फिक्स्ड है और C पॉइंट कहीं भी हो सकता है, क्योंकि कोई चाहता तो A पॉइंट को लाइट हाउस के पास भी ले सकता था, कोई इसे दूर भी ले सकता था. सो C पॉइंट कैन लाई एनीवेयर. यस सर. सर ये AC अगर इसको ट्रांसफर करेंगे तभी आ जाएगा ना OY पे, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल कोर्स हमारा पोजीशन कहाँ हुई. अभी तो ये हम सिर्फ CTS ड्रॉ की है सिर्फ रेफरेंस के लिए. करेक्ट? राइट बेटा, राइट. अभी हमें कुछ पता नहीं चला है. अभी हमने सिर्फ अपने मेथड को फॉलो करते हुए ये 2 लाइनें ड्रॉ की हैं. ठीक है सर. ओके ओके ओके. अब आगे चल रहे हैं. ये बेटा शुरू में समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं. पहला डाउट तो यही माइंड में आएगा कि बिना करंट के आपने ट्रांसफ़र कैसे कर दिया. ट्रांसफ़र तो CMG पे होता है. राइट. सो दीज आर नॉट एक्चुअली ट्रांसफर्ड PL, इसीलिए हमने इन्हें डबल एरो से मार्क भी नहीं किया है. ये सारा का सारा मेथड जो है ये आपको समझ में आएगा जब ये प्लॉट कंप्लीट हो जाएगा. ओके. सो हो सकता है उसके बाद भी समझ में ना आए. सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स एंड टू कंप्लीट द प्लॉट. सो स्टेप्स यहाँ तक क्लियर है बेटा? हाँ जी सर. वेरी गुड. यस सर. But PLs are intersecting at this particular point. So let's name this intersection point as E. So I have named it as ECO, E. Let's come back to the point C here now. From point C, we have to draw the direction of the current. Remember, the direction of the current is given to us in these questions. So from point C, we have to draw the direction of the current. Let's draw it. Let's assume the direction is given in this particular way. So we have plotted it on the chart. Let's mark it with 3 arrows. Current vector is marked with 3 arrows.
Now, wherever this current vector meets the TPL3, transferred PL3, name that point as F. So I have named that point as F. So beta, understood up to point F? सर Yes, करंट sir. कितने टाइम का लगाना है सर? बेटा टाइम तो है ही नहीं क्योंकि हमें करंट का रेट ही नहीं पता। अच्छा हमें रेट ही नहीं पता। ओके ठीक है, सिर्फ डालना है। ठीक है सर। राइट, सो जो भी डायरेक्शन दी गई है करंट की, हमने उसे चार्ली पॉइंट पे ट्रांसफ़र करना है, डायरेक्शन को लगा देना है, और जहाँ कहीं ये TPL3 को जाके कट करेगी उस पॉइंट को F नाम दे देना है। ओके सर ठीक है। ओके, सो चलें आगे बेटा। हाँ जी सर। वेरी गुड। Your mind may tell you that the CF is the set and rate of the current, which is not so. I will tell you what is the set and rate of the current. It will come a little later. For now, this is nothing. This is just representing the direction or set of the current. Now, what we have to do is, we have to draw our course steered from point F. The same course steered which we initially drew has to be drawn from point F now. So I have drawn the course steered from point F, marked it with a single arrow. Now wherever this course meets the third bearing line, that is OZ, let's name that point as G, golf. So we have the golf point here now. Now what we do is, we will draw a line to join our initial point A with this golf point. So draw a line joining alpha to golf. So we have this line now which is joining alpha to golf. Now this line, alpha golf AG, is cutting our current line CF. The point where it is cutting, let's name that point as H. So I have written this point as H here. Okay, so अब बताओ बेटा, any doubt up to point H? नहीं सर। Very good. So चलें आगे बेटा, move further from H. हाँ जी सर। Okay. Now in our plot, we have this point H, where line AG is cutting the current line CF. And we also have point E here, where both the transferred position line TPL1 and TPL3 intersected. Now what we do is, we join these 2 points with a line H and E, hotel and eco. So I have drawn a line passing from or joining these 2 points H and E. Now carefully see this line which I have drawn. This line is called as the ratio line. I will tell you what that ratio is. Now if you carefully see this ratio line, the dotted line which you see, is cutting our second bearing line OY at a particular point. You see, this is the particular point where it is cutting our second PL. Let's name this as J, Juliet. So we have this J point here, where the ratio line HE is cutting our middle PL or middle bearing OY. So beta, this point is also clear, J point? हाँ जी सर। यस
सर ये डॉटेड ही मारनी है सर, ये लाइन HE वाली रेशियो लाइन। हाँ, यू कैन मार्क इट एज डॉटेड, नॉट एन इशू। स्ट्रेट भी मार सकते हो, डॉटेड भी मार सकते हो, वट एवर ठीक है, ओके मेक्स योर प्लॉट लुक कंफर्टेबल। ओके सर। Okay, so shall we proceed ahead from J now? यस सर। Okay. Now from this point J, Juliet point, we have to draw a line in the direction of the current. So you can align your parallel ruler to CF, which represents the direction of the current. Take it to J and draw a line. So I have drawn the direction of the current through point J. Now when you draw this current here, you will see it will cross or it will touch the TPL1 and TPL3. Let's name these 2 points. Wherever this current line cuts the TPL1, let's name that point as K. And wherever this current line cuts the TPL3, let's name that point as L. So we have these 2 points K and L on our plot now. ये Z तक जाएगा लगता है सर। हाँ बेटा, मैंने तो पहले ही वार्निंग दी थी तुम्हें, लॉन्ग पोस्ट अहेड। मैं कहा सर शायद ये Z पे खत्म होएगी। So up to here, okay, up to K and L. यस सर। यस सर। कितने नंबर का आता है क्वेश्चन? 50 नंबर का? नहीं बेटा, ये 25 नंबर का ही है। ओके, चलें बेटा आगे। यस सर। Okay, all right. Now from this point K, we have to draw our course steered in the reverse direction. We had our course steered, Alpha to Bravo, this was our course steered. So we have to draw the course steered in the reverse direction from K. Let's draw it. So this is our course steered from point K in the reverse direction. Let's mark it with a single arrow. Wherever it goes and meets the first bearing line, that is OX, let's name that point as M. So we have this M point here on the plot. Now, from point L, you draw the course steered. In the same course steered, you have to draw from point L now. Let's draw it. Let's mark it with a single arrow. Now, wherever this course steered meets our third bearing line, that is OZ, let's name that point as N. So we have the points Mike and November, M and N in our plot now. So any doubt up to here, beta? Mike, November? नहीं सर। Okay, very good. So चलें आगे? यस सर। Okay. Now what we do is we join these 2 points, Mike and November, M and N, with a single line. So you see this green color line here, which is joining M and N. This line, Mike November, is our course made good. This is the course made good. Let's mark it with double arrows. The course made good is marked with double arrows. So this is the course made good of the ship. This is also the distance made good. So M to N is the distance made good by the vessel
from 1000 hours to 1100 hours. You will observe that this course and distance made good vector cuts the current line exactly at point J. Now this distance K to L, the red color vector which you see, is basically our current vector, and K to L distance gives us the drift of the current in this total time interval from 1000 hours to 1100 hours. Now since we have the distance Mn known to us, we can easily find out what is the speed made good of the ship. We have the distance made good, we have the time interval within which it has been made good. So this helps us to find out what is the speed made good of the ship. In this particular case, you see the time interval is exactly 1 hour. So whatever distance Mn you get, it is the speed made good of the ship. Similarly, the distance KL gives you the drift of the current. So you have the drift of the current, you have the time interval, you can easily find out what is the rate of the current. In this particular question, since the time interval is exactly 1 hour, whatever distance KL you obtain, the same will be the drift as well as the rate of the current. So up to here clear beta? Any doubt up to here? No, sir. Okay. Now these 3 points which you see, Mike, Juliet and November, lying on our course made good vector, these are our 3 positions at the time of 3 bearings. So point M is our initial position at 1000 hours. Point J is our position at the time of second PL, that is 1024 hours. And position N is our position at the time of 1100 hours. So this completes our solution of the fish triangle question. ओके सो हमारे पास बेटा तीनों पोजीशंस आ गई हैं, माइक, जूलियट, नवंबर. हमारे पास कोर्स मेड गुड, डिस्टेंस मेड गुड, करंट का सेट एंड सेट तो गिवन था क्वेश्चन में, द रेट ऑफ द करंट, ड्रिफ्ट ऑफ द करंट, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं. सो नाउ यू हैव द कंप्लीट प्लॉट इन फ्रंट ऑफ यू. किसी भी स्टेप में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछो. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स. फिर एक बार लास्ट वाली स्लाइड ओपन करना. ओके, लास्ट स्लाइड. सर ये जो डॉटेड लाइन है ये कहाँ से आई? डॉटेड लाइन कहाँ से आई बेटा? हाँ ये सर. ओके ओके, एक मिनट रुको बेटा. लेट मी फर्स्ट शो द प्रीवियस स्लाइड. दिस इज द प्रीवियस स्लाइड बेटा. तो ये तो करंट से पिछले वाली जिसमें लास्ट स्टेप किया और स्टेप्स दूसरी लिखे हुए थे. दिस वन सर एक बार सारी स्लाइड्स खोल देंगे, 3-4 जितनी भी है सबका स्क्रीनशॉट ले लेंगे. ओके बेटा, ओके 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 बेटा, ये पहली स्लाइड है. तो ये लास्ट स्लाइड ये आप स्लाइड शिफ्ट नहीं हो रही हमारे. बेटा मैं सारी दिखा रहा हूँ शुरू से लेके एंड तक. आई एम शोइंग ऑल द स्लाइड्स. विच एवर यू नीड जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट. Shall we move on to the next one? यस सर. सर मेरे वाले में सिर्फ ये फिश ट्रायंगल जो कैलकुलेट है सर, ये यहीं पे स्टॉप है. सर सेम सर, मेरे साथ भी सेम है.
एक ही जगह पे वो स्टार्ट चेंज कर। नहीं हो रही है, सबके साथ सेम है सर। ओके बेटा, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। Can you see the first slide now where 3 PLs are plotted? Yes sir. ये पहली स्लाइड थी बेटा हमारे प्लॉट की। Let me know once you have noted. Okay sir, we can go next. Okay. This is number 2 beta. Okay sir. Okay, this one is number 3. Okay. This is number 4. Okay sir. And this one is the last one, number 5. Okay beta, done? हाँ सर, ओके। ओके, सो अब हम चलते हैं कि ये डॉटेड लाइन हमारे पास कहाँ से आई। सो लेट मी शो यू। ओके, सो आई एम गोइंग बैक लिटिल बिट। बेटा सबसे पहले तो हमने 3 बियरिंग लाइंस को प्लॉट किया था एंड उसके बाद हमने कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया A ऑन आवर फर्स्ट PL। इस A पॉइंट से मैंने अपना CTS ड्रॉ कर दिया है विच ज्वाइंस द थर्ड पोजीशन लाइन एट ब्रेवो। सो अल्फा ब्रेवो, ओके? यस ओके, अब बेटा A पॉइंट से मैंने एक डिस्टेंस मार्क किया इस CTS पे, AC डिस्टेंस। हाउ मच इज दिस AC डिस्टेंस? दिस इज माय इंजन डिस्टेंस between the first PL and the second PL. So AC is okay बेटा? यस Similarly मैंने डिस्टेंस BD मार्क किया है इस CTS लाइन पे। ये कितना डिस्टेंस है? BD is the engine distance between the third PL and the second PL, that is 1024 and 1100. This is also okay? यस ओके, अब मैंने बेटा अपने पैरेलल रूलर को फर्स्ट PL के साथ अलाइन किया OX और इसे ट्रांसफ़र कर दिया पॉइंट C पे, लाइक दिस। सो ये ट्रांसफर्ड PL1 TPL1 लाइन आ गई बेटा। यस इसी तरह से मैंने अब पैरेलल रूलर को अलाइन किया थर्ड PL के साथ OZ एंड इसे ट्रांसफ़र किया थ्रू पॉइंट डेल्टा एंड इसे मैंने नाम दिया TPL3। सो TPL3 लाइन आ गई। ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे। इस पॉइंट को नाम दे दिया इको E। सो E पॉइंट आ गया बेटा। अब जो मेरा चार्ली पॉइंट है, इस चार्ली पॉइंट पे मैंने अपने करंट की डायरेक्शन को अप्लाई कर दिया। मेरे पास सिर्फ करंट की डायरेक्शन है, करंट का रेट और ड्रिफ्ट मुझे नहीं दिया हुआ है। सो आई अप्लाई द डायरेक्शन ऑफ माई करंट एट पॉइंट C. It takes me to point F on TPL3. Okay beta, up to here clear? यस सर From point F, I draw my CTS, same CTS which I had drawn in AB. So this CTS takes me to golf point on the third PL. Okay beta, golf okay? यस
Now I join अल्फा टू गोल्फ. अल्फा पॉइंट मेरे पास पहले से ही था, गोल्फ पॉइंट मैंने अभी आइडेंटिफाई किया है. इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया है विद ए सिंगल लाइन. Wherever this line cuts the current line, that point is named as H. Okay, beta? Yes, sir. Now I join E and H. जैसे ही मैं EH को ज्वाइन करता हूँ, I get my ratio line or the dotted line. Yes. Understood. So, understood बेटा? Yes. Okay. और बताओ बेटा, और कोई डाउट आ रहा है? नहीं सर, क्लियर है. थैंक यू सर. Other people also, you can have a good look at the plot beta. Let me know if there are any doubts. सर इसी को कॉकटेट भी बोलते हैं क्या, इसी प्रॉब्लम को? नहीं बेटा, इसे कॉक्ड हैट नहीं बोलते हैं. कॉक्ड हैट इज a different concept which we will do in CellNav. This is not cocked hat. ओके सर. तो सर फिश ट्रायंगल है कौन सा सर? ओके. अब बेटा याद है बचपन में फिश बनाया करते थे ड्राइंग के सब्जेक्ट में? यस सर. वो फिश कैसी होती थी? लेट मी शो यू. पर इसका यूज कहाँ पे है? बेटा यूज तो मैंने पहले Exam बता में. दिया था कि इसका यूज कभी होने वाला नहीं है. इसका यूज सिर्फ एग्जामिनेशन में मार्क्स लेने के लिए है. हाँ जी सर, पेपर को सर, ये पेपर को अगर वो करो ना, वर्टिकल करो तो दिखता है जैसे फिश का दो साइड से जाता हो और सेंटर में आई बना हुआ. किसी ने फ्रस्ट्रेट होकर सर ये सब ऐड कर दिया है. एग्जैक्टली बेटा, नाउ यू गॉट टू द पॉइंट. But the thing is that it has been added now, so it will not go out. Okay, you can see the screen beta? Yes sir. Okay. Yes. So बेटा अगर तुम्हें याद हो तो हम लोग बचपन में ऐसे फिश बनाया करते थे. करेक्ट बेटा? Yes sir. ऐसे फिश बनाते थे ना बचपन में जब छोटे थे? Yes sir. तो अब तुम अगर यहाँ पे देखो तो ये जो ट्रायंगल्स बन रही हैं ये कुछ कुछ ऐसी ही बन रही हैं. ऐसी ट्रायंगल बन रही ना बेटा? You can see the upper triangle, the triangle AGFC. This triangle which you are trying, not it's basically a group of two triangles. Alpha Charlie Hotel Foxtrot Golf. It is something like this. So it is similar to this fish we were making in the childhood. So that's why the name given fish triangle. Okay sir. Okay, thank you sir. Okay. ओके. और बताओ बेटा, और क्या डाउट है? सर जब आप करवाते हो तो एकदम इजी होता है, बट जब क्वेश्चन होता है तो एकदम डिफिकल्ट हो जाता है सर वो. हाँ, उसे इजी बनाने का तरीका भी बताते हैं बेटा. उसे इजी बनाने का एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस. सो उसको इजी बनाएंगे. अभी मैं आपको असाइनमेंट नंबर 5 दूंगा, उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन है, ओनली 2 क्वेश्चंस. सो बोथ आर ऑन दिस फिश ट्रायंगल. सो ये दोनों क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करने हैं. जब इनको प्रैक्टिस कर लेंगे चार्ट पे तो ये हमारे लिए भी इजी हो जाएगा. सर ये क्वेश्चन ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं ना सर, मतलब ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आते होंगे? राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसमें बिल्कुल कोई घुमा फिरा के कुछ नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ऐसा नहीं आता होगा ना? नो, इसमें जितना घूमना फिरना था वो हम घूम लिए. और बस कोई स्टेप फॉलो करो और क्वेश्चन सॉर्ट है ना, बस नॉर्मल सा. रिमेंबर द स्टेप्स ABCDEFGHIJ वो तो हो गया सर, वो तो हो गया. वो दिखने में ज्यादा है, वो करने में इतना नहीं जाएगा. एग्जैक्टली बेटा, जब आप करोगे ना, दिखने में अभी थोड़ा सा लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट वंस यू फॉलो दीज स्टेप्स तो आपको पता चल जाएगा दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट. इतना नहीं है. हाँ ठीक है सर. हाँ जी. सर
बोलो बेटा। सर आपके पास CL दुबे का सॉफ्ट कॉपी पड़ा है क्या चार्ट वर्क का? नहीं बेटा, नहीं है। मैं पूछ कर दूंगा, मेरे पास पड़ा है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, CL दुबे सर की स्टेबिलिटी वाली भी डाल देना और चार्ट वर्क वाली भी अगर किसी के पास है तो। स्टेबिलिटी ना है, ये चार्ट वर्क डाल दूंगा। डाल दे भाई, डाल दे। ओके बेटा, सो अब ऐसा करते हैं। हाँ बोलो बोलो बेटा। सर ये फिश ट्रायंगल की जगह इसको खिचड़ी नहीं बोल सकते थे सर? बेटा कुछ भी नाम दे सकते हो आप, बट कीप इट टू बहुत ज्यादा योरसेल्फ। खिचड़ी, फिर मैं इतनी लाइनें खींचते खींचते सर परेशान हो जाएंगे इसमें। नंबर मिलेंगे बेटा, 25 नंबर। ऐसा लग रहा है 25 से ज्यादा तो लाइन ही है। एक दो बार करोगे इट विल बिकम इजी बेटा। सो अब ऐसा करते हैं बेटा, वी हैव ऑलरेडी स्ट्रेच्ड, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आई डिड नॉट वांटेड टू गिव ब्रेक इन बिटवीन, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट। सो इफ यू वांट यू कैन टेक ए ब्रेक नाउ, है ना। माई सेशन इज टिल 11:15, सो इफ यू वांट यू कैन टेक ए कंप्लीट ब्रेक, नॉट एन इशू। मैं आपको अभी इसकी एक असाइनमेंट भेजने वाला हूँ। आई विल सेंड इट टू यू जस्ट नाउ। You can start practicing that assignment, and I have one more lecture with you in the afternoon, so you can continue your practice of the assignment in that lecture also. Okay sir, thank you हाँ सर, इतना तो टाइम लगेगा ओके सर, करने में। No problem, you can continue बेटा। इसीलिए I want this topic to be clear in your mind before I proceed to the next one, क्योंकि अगले वाला भी एक bouncer type question है। Okay. So before I go into the next one, I need this topic to settle down in your brain. So you can take a break now up to 11:15. Sorry, the next class is at yeah, my class is 11:15. Next is at 11:30. So you can continue your practice till the time you have your next class, and in the PM session also you can continue the practice of the assignment. थैंक यू सर। सर एक रिक्वेस्ट थी, जो हम वापस असाइनमेंट करके भेजते हैं, कोई गलती लगे तो सर प्लीज बता दीजिए अगर। Yeah, I will tell you. मैं जो असाइनमेंट आपको भेजता हूँ आप उसके साथ मैच करके देखो। हाँ। If there is any difference, let me know when you send the assignment. Sir, there is a difference coming in this particular question. Otherwise, I will also see if I find something unusual and odd, I will reply back. ओके सर, यही था सर। सर अभी असाइनमेंट सबमिट तो नहीं करने ना सर, मतलब अभी कर लिए मैंने लेकिन आपको सेंड नहीं किए हैं। Not required beta, just keep it safely with you. Okay sir, okay, thank you. Okay. So we go for a break now beta. See you in the PM session then. Thank you sir. Okay sir, thank you. Keep logged in, don't log out. थैंक यू सर। Right. Yes sir.